Let me share the screen again. Okay, तो हम क्या बात कर रहे थे? We are talking about the high level of TensorFlow. So just 1 second. Let me minimize it. Okay. So higher level abstraction in TensorFlow simplify the process of creating deep learning models by providing, simplified model development, faster prototyping, increase productivity, and seamless experiments. एप्लीकेशन तो इसमें क्या क्या है एप्लीकेशन आप वीडियो डिटेक्शन के लिए इमेज रिकॉग्निशन के लिए ये सब काम प्रोजेक्ट देखेंगे हाँ सो अभी बहुत समय तो हमारा बाकी नहीं है मतलब एटलीस्ट वी ट्राई टू कंप्लीट एवरीथिंग विद इन एज मच एज less this possible okay so video image recognition handwritten digit classification recurrent neural networks word embedding and NLP बहुत सारे कंपनीज लाइक उबर शेप डिटमाइन कोका-कोला ड्रॉपबॉक्स ईबे इंटेल ये सब यूज करते हैं आपका हम इसका यूज केस देख सकते हैं हेल्थ केयर का राइट it helps in processing and analyzing medical images that can significantly aid in diagnosing diseases with more speed and precision. Google ने डेवलप किया है टर्म असिस्ट याद रखना ठीक है टर्म असिस्ट अभी गूगल में सर्च करके देखना using TensorFlow. It allows one to take pictures of the skin and make possible diagnosis for various skin condition के आपने आपका जो स्किन है उसमें क्या प्रॉब्लम हो सकता है पॉसिबल उसको डायग्नोज करते हैं सोशल मीडिया में लाइक एक्स ट्विटर सबको पता होगा it implemented TensorFlow to rank Twitch according to user preferences. Then this is a photo sharing app Vespo that uses TensorFlow to suggest filters for photo. कौन सा filter सही रहेगा एक particular photo के लिए that has been suggested. Then Google Rank Brain is a search engine released by Google. Uses TensorFlow to process the search result. Education में भी हम use करते हैं like to filter toxic chat messages in classroom in a partial learning platform. Suppose आपके साथ मैं partial learning platform में हूँ से any platform I'm not naming it तो उसमें कुछ चैट मैसेज बुरा कुछ वॉइस कुछ टॉक्सिक चैट मैसेजेस हैं उसको फिल्टर करते हैं राइट it is used to accurately identify students' current capabilities and help them decide the most suitable course of action in the future. Retail में like quite a few e-commerce platforms use TensorFlow to get personalized customer recommendation कि किसको क्या रिकमेंड करना चाहिए तो और बहुत सारे केसेस हैं हम अभी उससे पहले थोड़ा बहुत प्रैक्टिकल कर लेते हैं लेट मी कम टू बैक टू द प्रैक्टिकल पार्ट so tasks is like दिस बेक प्रोपागेशन नहीं कल हमने किया था जस्ट ए मिनट हाँ हाँ यस जो कल हमने किया था दैट इज लाइक फॉरवर्ड प्रोपागेशन का देखा था अभी जो है दिस इज बेक प्रोपागेशन एंड रेगुलराइजेशन लेबोरेटरी राइट सो बेक प्रोपागेशन में हम जो टास्क करेंगे इसमें क्या क्या है फॉरवर्ड प्रोपागेशन प्रेडिक्शन लॉस कैलकुलेशन backward propagation, weight update, and lower loss. Okay, forward prediction, propagation, prediction, loss calculation, backward propagation, weight update, and lower loss. ये loss को हमें कम करना है. Objective रहेगा. We have to build a small neural network and observe that training loss, validation loss, overfitting, effect of dropout, effect of L2 regularization, and effect of early stopping. तो पहले हमने एक नॉन लीनियर डाटा सेट को क्रिएट किया जस्ट अ मिनट लेट मी गो थ्रू इट at the end right yeah yeah okay so we have to first import numpy and import matplotlib pyplot splot and we are creating one nonlinear data set
Let me go with that. Okay, this is running. Then second part is that minus T3 500 np.line space minus T3 500. So it will create 500 values between minus 3 and 3. ये ठीक है. नेक्स्ट में हम जाते हैं. तो माइनस 3 एंड 3 के बीच 500 वैल्यूज को क्रिएट कर देगा ये. देन वी हैव y is equal to np dot sin x plus 0.2 np dot random rndn 500. So let me create this. हम क्या कर रहे हैं इसमें, आप जानते हो ना एक इक्वेशन अगर y is equal to sin x है प्लस नॉइस, ये sin x, दिस इज बिकॉज ऑफ दैट विल हैव वन नॉन लीनियर रिलेशनशिप, ये लीनियर नहीं रहेगा, राइट. एंड नॉइस मेक्स द प्रॉब्लम मोर रियलिस्टिक. नॉइस हम जानबूझ के ऐड किए हैं ताकि और थोड़ा सा रियलिस्टिक हो. तो ये कैसे किया है, यहाँ पे हमने एन पी डॉट साइन एक्स नॉन लीनियरशिप आ गया आपका, एंड 0.2 इंटू एन पी डॉट रैंडम डॉट रैंड, इससे आपका नॉइस आ रहा है, ठीक है, ताकि और रियलिस्टिक हो. अब हम डेटा सेट को क्या करेंगे, विजुअलाइज करेंगे. विल विजुअलाइज द डेटा सेट. फर्स्ट विल स्कैटर एंड शो द आउटपुट. स्कैटर प्लॉट हम यूज करेंगे. स्कैटर प्लॉट हम इसलिए यूज करते हैं ताकि दो वेरिएबल्स, सपोज यहाँ पे एक्स एंड वाई है, उसके बीच क्या रिलेशनशिप है वी कैन नो. सो एक्स लेवल इनपुट एक्स, वाई लेवल टारगेट वाई, और टाइटल दिया नॉन लीनियर डाटा सेट. यू कैन सी दिस इज ए नॉन लीनियर डाटा सेट. वैल्यूज कहाँ पे था आपका, माइनस 3 और 3 के बीच 500 वैल्यूज हमने लिया है. So you can see this is a sin x, this is a sine diagram, right? So non-linearship exists between them. Next, इसको साइन वेव बोलते हैं हम लोग. साइन वेव पैटर्न ये जो दिख रहा है ना, दिस इज ए साइन वेव पैटर्न. ओके, लेट्स गो बियॉन्ड दैट. विल रीसेप द डेटा. ओके, x is equal to x dot resave minus 1 comma 1. Neural network expect input in the form say number of samples into number of features. ऐसे ही तो न्यूरल नेटवर्क में हम इनपुट देते हैं. नाउ 500 वैल्यूज क्या हो जाएगा, अभी ये जो सेव किया रीसेव माइनस 1 इंटू 1, सो 500 रोज इंटू 1 फीचर्स. Let's do it. X is equal to x dot reset minus 1 1. तो यहाँ पे 500 फीचर्स, मतलब 500 रोज एंड किसमें एक फीचर्स के लिए हमने ले लिया. नाउ इसको हम स्प्लिट करेंगे. नेक्स्ट स्टेप इज splitting the data set. From sklearn.model we have to select import train test split and then import the dataset. Splitting person यही हम import किए हैं. So let's first include this line here. Okay, and then x train, x test, y train, y test, ये जो फंक्शन यूज कर रहा हूँ ट्रेन टेस्ट स्प्लिट, और x y टेस्ट साइज में 0.2 दिया है, मतलब 20%. रैंडम सेट 42 रख दिया है. दिस इज जस्ट डिफॉल्ट नंबर, इट नॉट डिफॉल्ट, एवरीवन नाउ यूज टू use this number. So from sklearn.model sklearn import train test split, x के train, x test, y train, y test, टेस्ट साइज 0.2 20%. रैंडम सेट में मतलब हर बार जो भी रैंडम वैल्यूज रह रहा है वो डिफरेंट होगा. ओके, नाउ हम क्या करेंगे, न्यूरल नेटवर्क को क्रिएट करेंगे. क्रिएट ए नेटवर्क, न्यूरल नेटवर्क विदाउट रेगुलराइजेशन. ओके, first for that what we have to do, we have to import the TensorFlow, right? Then next is that we have to create that sequential model, right? तो इसके लिए हम क्या करेंगे, it will create one. So just a minute, just. So import TensorFlow as tf model tf.keras.sequential. tf.keras layers dense 128 लिया है हमने, right? Neurons and activation function हमने लिया है ReLU. ओके, सॉरी कहाँ पे कॉमा आ गया है, डॉट, जस्ट वन सेकेंड, इस कॉमा को हटाना होगा.
ये हमने क्या किया, जस्ट 1 मिनट। हाँ, डेंस लेयर और एक हिडन लेयर हमने लिया 128 न्यूरॉन्स एक्टिवेशन रिले फंक्शन, एंड देन वन एक्स्ट्रा लेयर फॉर द आउटपुट लेयर विथ वन आउटपुट। नाउ हम इस मॉडल को ट्रेन करेंगे, कंपाइल करेंगे पहले। वी हैव टू कंपाइल द मॉडल। लेट मी कंपाइल द मॉडल। It is compiled. Adam updates, Adam use किया है Adam optimizer because it updates the weight. MSC measures the prediction error. Now we'll train the model. Let's train the model. ट्रेन हो रहा है, हमने 0.2 लिया है स्प्लिटिंग, एंड इपॉक्स 300 कंसिडर किया है, भार्बो 0। ट्रेनिंग के दौरान कोई लाइन डिस्प्ले नहीं होगा, और 300 इपॉक्स। You can see this is executing 27, 29 seconds. It will take some time. Now it is being done in 335 seconds. Okay, you can see here. Okay, next. So ये जो मॉडल है इसमें 300 इपॉक्स हमने यूज किया है, एंड ड्यूरिंग ईच इपॉक क्या हो रहा है, फॉरवर्ड प्रोपागेशन, कैलकुलेट द लॉस, बैकवर्ड प्रोपागेशन, कैलकुलेट द ग्रेडियंट्स ऑफ दिस वेज। फॉरवर्ड प्रोपागेशन में हमने लॉस कैलकुलेट किया, बैकवर्ड प्रोपागेशन करके ग्रेडियंट्स को कैलकुलेट करके अपवर्ड्स को अपडेट किया। लुक एट द कोड अगेन। ओके, सो यू कैन सी हियर, पहले हमने एक सीक्वेंशियल मॉडल, न्यूरल नेटवर्क मॉडल बनाया, जिसमें 3 लेयर, जो फर्स्ट लेयर में 128 न्यूरल एक्टिवेशन फंक्शन रिलू, सेकेंड में भी सेम 128 रिलू, थर्ड में एक न्यूरल यूज किया है, हमने कंपाइल किया एडाम ऑप्टिमाइजर एंड दोस एंड सी, एंड देन ट्रेन किया वैलिडेशन स्पीड 0.2, इपॉक्स 300 एंड फाइबोस 0। अब हम ये जो ट्रेनिंग एंड वैलिडेशन लॉस है इसको विजुअलाइज करेंगे। विल विजुअलाइज द ट्रेनिंग एंड वैलिडेशन लॉस। ओके, सो दिस इज फर्स्ट प्लॉट हिस्टोरी loss, and then history well loss, then epoch and loss। x लेवल में हम epoch रखेंगे, y लेवल में loss रखेंगे, then loss validation loss रीजन में, then टाइटल हमने ट्रेनिंग वर्सेस validation loss रख देंगे। ठीक है, उसके बाद हम शो कर देंगे। So let's do this। You can see here plot history, ये सारे हमने यहाँ पे इंक्लूड कर लिया। Let's, we are trying to plot it। You can see that we have this diagram now, training versus validation loss। X level में हमने epoch रखा है, Y level में loss। So this orange color is validation loss, and this blue color is the training loss। So you have to observe now. What you have to observe? You have to observe the training loss pattern and validation loss pattern। This means training error decreases, validation error increases। अगर ऐसा हो रहा है तो क्या मैं बोल रहा हूँ, एक बार नोटिस करना फिर से। ट्रेनिंग लॉस डिक्रीजेस और ट्रेनिंग एरर डिक्रीजेस, validation error decreases। ये जो होगा ना, दिस इज a साइन ऑफ ओवरफिटिंग। व्हाट इज दैट? दिस इज a साइन ऑफ ओवरफिटिंग। यहाँ पे तुम फिर से देखो, ये ट्रेनिंग लॉस है ब्लू कलर का, लॉस का वैल्यू ऐसे आगे ऊपर बढ़ रहा है। अगर ये ऊपर होगा तो इसका वैल्यू सबसे ज्यादा है, राइट। आप ट्रेनिंग लॉस ऊपर है और वैल्यूएशन लॉस नीचे है, तो इसका मतलब क्या, ट्रेनिंग लॉस ज्यादा है, राइट। हमें ये बोला गया है अगर ट्रेनिंग एरर डिक्रीजेस, वैल्यूएशन एरर इंक्रीजेस, तब ये होता है ओवरफिटिंग का साइन। फिर से बोल रहा हूँ, अगर ट्रेनिंग एरर डिक्रीज हो रहा है, ट्रेनिंग में अच्छा काम कर रहा है, बट वैलिडेशन एरर इंक्रीज हो रहा है, तो वो होता है ओवरफिटिंग। अब तुम लोगों को बताना है, ये ग्राफ मैंने पूरा दिखाई दिया है, कि ये जो कार्व है ट्रेनिंग का, मैंने बोल दिया ना आपको, ब्लू है, वैलिडेशन का ऑरेंज है। सो ट्रेनिंग ज्यादा है, या ऑरेंज वाला आप नोटिस करके वैलिडेशन ज्यादा है। बस मुझे बताना है कि ये प्रॉब्लम जो है,
ये जो प्रॉब्लम है, इसमें ओवरफिटिंग आ रहा है या नहीं आ रहा है। गॉट माय क्वेश्चन? सभी से जितने जन हो, सभी लोगों को ये आंसर देना है ग्रुप में, ठीक है? ओके, we have seen that training error decreases, error validation error increases, means dropout, means overfitting. So हमने ये प्रॉब्लम के साथ डील करने के लिए ड्रॉप आउट इंक्लूड किया। ओके, ड्रॉप आउट हम जनरली इंक्लूड ही करते हैं। So again, we have to create a new model, dropout model, tf.keras sequential। बाकी सब सेम रखा, 128 न्यूरॉन्स रखा, एक्टिवेशन पाथ रिलू रखा, बट इसमें एक लेयर इंक्लूड कर दिया स्पेसिफिकली, tf.keras लेयर्स ड्रॉप आउट 0.5। फिर से दूसरा लेयर, उसमें भी हमने ड्रॉप आउट 0.5, एंड लास्ट लेयर एज इट इज 1 है, ठीक है? इसमें क्या होगा अभी, व्हाट डज द ड्रॉप आउट डू ड्यूरिंग ट्रेनिंग? ये इंपॉर्टेंट है। ड्रॉप आउट क्या करेगा एग्जैक्टली? ड्यूरिंग ट्रेनिंग सम न्यूरॉन्स आर रैंडमली स्विच ऑफ। से बिफोर ड्रॉप आउट इतना था आपका न्यूरॉन्स, दिखाई दे रहा है, और आफ्टर ड्रॉप आउट इतना हो गया है। तो इससे क्या होगा, दिस फोर्सेस द नेटवर्क टू लर्न मोर जनरल पैटर्न। क्योंकि कुछ कुछ न्यूरॉन के टुवर्ड्स अगर बायस रहेगा तो उसी को सीखेगा, उसी को लर्न करेगा। अब कुछ ड्रॉप आउट हो गया तो सिर्फ एंड सिर्फ जो जनरलाइज पैटर्न है उसको लर्न करेगा, ठीक है? तो हम इसको फिर से मॉडल को बना रहे हैं विथ ड्रॉप आउट 0.5 रखा है, ड्रॉप आउट मॉडल। यू कैन सी हियर, दिस इज द लाइन आई एम टॉकिंग अबाउट, tf.keras.layers.dropout 0.5। यहाँ पे भी सेकेंड में भी हमने रखा, थर्ड में नहीं ऑफ कोर्स। तो ये हो गया रन। आप इसको हम कंपाइल एंड ट्रेन करेंगे। ओके, पहले हम वही एडम ऑप्टिमाइजर यूज किया। लेट मी यूज द एडम ऑप्टिमाइजर, लॉस फंक्शन एमएससी यूज कर रहा हूँ। आप इसको ट्रेन टेस्ट करेंगे, ट्रेनिंग करेंगे, और ट्रेनिंग के लिए हमने रखा एक्स वैलिडेशन स्प्लिट 0.2, एपॉक 300 एंड वर्बोस 0। टाइम लगेगा थोड़ा सा, वेट फॉर इट। जी, पहले जो था, पहले हमें कितना 35 सेकेंड लगा था, अभी देखते हैं कितना लग रहा है इसमें, हाउ मच टाइम इट विल टेक। अभी लगा 31 सेकेंड, कम लगा ना? पहले 35 सेकेंड लगा था, अभी 31 सेकेंड लगा। नाउ ये हो गया हमारा ट्रेनिंग। नाउ वी विल कंपेयर द लॉस। ओके, सो प्लॉटिंग फिर से हम करेंगे, वैलिडेशन लॉस विदाउट ड्रॉप कट, विद ड्रॉप कट। इसको हम प्लॉट करेंगे, प्लॉट वेल लॉस, then X level epoch, Y level validation loss, without dropout and with dropout, and then title effect of dropout on validation loss. So ये देख सकते हैं आपको, विदाउट ड्रॉप आउट वाला ब्लू रखा है और विद ड्रॉप आउट वाला ऑरेंज। विदाउट ड्रॉप आउट, दिस इज द लाइन, and with drop out, this is the line. Now what you can notice from this diagram, इससे क्या समझ में आ रहा है? Please give me one line answer. Okay, I'm waiting for that. Now add L2 regularization, इसमें हम अब L2 regularization add करेंगे। From TensorFlow, we are going to import regularizers. Okay, TensorFlow से हम regularization को हम import करेंगे। Let's import it, regularizers from TensorFlow dot keras import रेगुलराइजर। देख रहे हैं ना अभी आपको, केरास से हम यूज कर रहे हैं, मैंने बोला था ना सेकेंड जो है, सेकेंड एंट्रोप्रो का नेटवर्क केरास यूज कर रहे हैं हम। आप इससे हम क्या करेंगे, रेगुलराइजर्स को इंपोर्ट करेंगे। कैन सी हियर, यस। So L2 model tf.keras sequential,
बाकी सब 1 to सेम रखा है। फर्स्ट लेयर में 128 न्यूरॉन्स एक्टिवेशन रिव्यू। देन यहाँ आपको दिखेगा कार्नेल रेगुलराइजर्स डॉट L2 0.001। ये वैल्यू हमें खुद देना है 0.001। सिमिलरली सेकेंड में भी कार्नेल रेगुलराइजर्स L2 0.001। मैंने बोला था ना एक वैल्यू, प्रोबेबिलिस्टिक वैल्यू। ओके, दैट्स a kind of hyperparameter, and last layer is this one. Let me run this run. तो ये क्या कर रहा है, सपोज नॉर्मल लॉस जो भी होगा, ओरिजिनल लॉस एंड L2 क्या हो रहा है, टोटल लॉस प्लस ओरिजिनल लॉस प्लस पेनाल्टी फॉर लार्ज वेट। रेगुलराइजेशन यूज करने से क्या एक्स्ट्रा हो रहा है, जो लॉस मिलेगा टोटल लॉस, ओरिजिनल लॉस के साथ हमने पेनाल्टी रख दिया लार्ज वेट के लिए। इससे क्या होगा, नेटवर्क इज डिस्कोरेज फ्रॉम यूजिंग एक्सट्रीमली लार्ज वेट। आप नेटवर्क को हमने डिस्कोरेज किया है ताकि वो लार्ज वेट यूज ना करे, राइट। क्योंकि लार्ज वेट के लिए पेनाल्टी रखा है, W² × λ, आपको याद होगा। ठीक। नाउ यहाँ पे अभी हम अर्ली स्टॉपिंग यूज कर देंगे। वी आर यूजिंग अर्ली स्टॉपिंग हियर, राइट। So let me alert. Early stop. Earlier also I told you what is the purpose of it. Unnecessary competition को हम ये नहीं करेंगे। से पेशेंस 10 रख दिया, 10 बार देखेंगे लॉस सेम रह रहा है तो नेक्स्ट हम और रन नहीं करेंगे। ओके, दिस डन। तो यहाँ पे हमने मॉनिटर किया वेलनेस, मॉनिटर वेलिडेशन लॉस, पेशेंस 10 रखा, दैट इज वेट फॉर 10 epochs विदाउट इम्प्रूवमेंट। हाँ, तो विदाउट इम्प्रूवमेंट 10 epoch के लिए हम वेट करेंगे। रिस्टोर बेच वेट टू मंथ्स, रिस्टोर द वेट फ्रॉम द बेस्ट परफॉर्मिंग वेट। जिस जो इपॉक से बेस्ट परफॉर्म मिल रहा है, जो वेट से आपका परफॉर्मेंस अच्छा आ रहा है, तो उस वेट को हम रिस्टोर करेंगे। एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस टाइप ऑफ रियल मशीन लर्निंग प्रोजेक्ट। सो रिस्टोर बेस्ट वेट इज इक्वल टू ट्रू हमने इंक्लूड किया है। Right, this is done. Now, next thing, we will train the L2 model. First we will use the Adam optimizer, कंपाइल के लिए कंपाइल किया, लॉस MSE यूज कर रहे हैं। आप L2 मॉडल हीट एक्सट्रेन वेलिडेशन स्प्लिट इपॉक 300, तो आप इसको, you can see we are training it, validation split 0.2, epochs 300, callbacks early stop करेंगे for percent 10 and verbose 0 use कर रहे हैं। Let's see how much time it will take. It is executing now. Done. 22 सेकेंड। ओके, तो फर्स्ट जो हमने रन किया था दैट टुक आई थिंक 35 सेकेंड, राइट, 35 सेकेंड। Then now it is like 31 second when we have include this dropout, and then L2 we have done and it took 22 seconds. So let's final comparison, go for the final comparison part. Okay, कुछ प्लॉट करेंगे जैसे कि वेल लॉस के लिए drop out without drop out, and then let me show you what exactly we learn. So हिस्टोरी से हमने वेल लॉस लिया, फिर से ड्रॉप आउट हिस्टोरी से वेल लॉस लिया, L2 हिस्टोरी से वेल लॉस लिया, मतलब ड्रॉप विदाउट दिस ड्रॉप आउट एंड L2 जो भी था, विथ ड्रॉप आउट जो था, और विथ L2 जो आपको मिला था वेल लॉस, इनको हम प्लॉट करेंगे। एक्स लेवल इपोक रखा है, वाई लेवल वैलिडेशन लॉस, राइट। नो रेगुलराइजेशन, ड्रॉप आउट, L2 रेगुलराइजेशन। फर्स्ट वाला आपका नो रेगुलराइजेशन, सेकेंड वाला आपका ड्रॉप आउट, एंड थर्ड वाला L2 रेगुलराइजेशन। टाइटल रख दिया कंपैरिजन ऑफ द रेगुलराइजेशन टेक्निक। लेट मी शो यू this thing now. See, now no regularization is the green one, dropout is the orange one, and this blue one is the
No, sorry, blue one is the non-regularization and orange is the dropout and green is the L2. Now look at the curve very carefully. जो ग्रीन वाला दिखाई दे रहा है L2 regularization, यहां से होके यहाँ पे खत्म हो रहा है 150 के अराउंड। आपको याद होगा हमने यहाँ पे पेशेंस भी यूज किया है, अर्ली स्टॉप 10। देन ऑरेंज वाला ड्रॉप आउट के साथ आप देख सकते हो रन हो रहा है, और जो वैलिडेशन लॉस है like it's starting from 22 or 23 and it goes here, this almost below 0 0.4, so like that near around 0 0.4, and this blue one which is the no regularization, it is starting from almost 0.25 or 0.26 and it is being start here, ये ऑरेंज से नीचे दिखाई दे रहा है आपको, ठीक है। तो इपॉक जैसे ही बढ़ रहा है आपका, तो किसमें वैलिडेशन लॉस कम हो रहा है ये आपको ऑब्जर्व करना है, ठीक है। नो रेगुलराइजेशन यहां से ही स्टार्ट हो रहा है, धीरे धीरे जब इपॉक बढ़ रहा है तो वैलिडेशन लॉस कम हो रहा है यहाँ तक। देन ड्रॉप आउट के साथ यू कम हियर फॉर दिस गॉड एंड चेक इट, एंड L2 रेगुलेशन के साथ you can see that it stops early at 150 itself. Now you what you have to do, ये पूरा कर्व को, मतलब ये प्रैक्टिकल करके पूरा कर्व को एनालिसिस करके आपको बताना है what you have learned. Okay, what you have learned from this comparison amongst this no regulation, dropout, L2 regulation, loss के साथ क्या हो रहा है, तो you have to write and you show it to me. And one thing you should remember, this table, like no regularization, main behavior is that may overfit हो सकते हैं, drop out randomly removes neurons, L2 regulation penalizes the very weights, and early stopping stop the training at the right time, ठीक है। ये टेबल बना लेना। Okay, the concept that what we have learned from the visualization, so you can see that picking up, तो जो हमने सीखा अभी, forward propagation, hidden layers, then backward propagation for the weight updates, and this is the loss that we try to minimize, right? The practical that I asked you this question, you can go with a diagram answer like model, training loss, validation loss, overfitting, no regulation, dropout, L2 regulation, ऐसे बना लिया। इस टाइप का ऑब्जर्वेशन भी आप कर सकते हो, ओवरफिटिंग हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो ये मुझे चाहिए आप सभी लोग एक्सपेरिमेंट करने के बाद ये बना के दिखाओगे। देन क्वेश्चंस लाइक व्हिच मॉडल परफॉर्म बेस्ट, इसमें सिर्फ आंसर ऐसा नहीं होना है कि द मॉडल इज द लोएस्ट ट्रेनिंग लॉस, बट यू हैव टू गिव आस ए रीजन, ओके। The model, base model is the one generally that achieves a good validation loss and generalizes well to uncertain data. So ये आपको करना है आज before the stipulated time, before the time given to you as a deadline. Okay, ये सारे करके you have to show it to me, and for any query you can ask me. Thank you.